Very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Sunday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. जैसा कि आपको पता है, 11 बजे सुबह में the Hindu analysis लेके आते हैं. Am I audible? Yes. So today is Sunday and today is 9th October. आज 9 अक्टूबर संडे है और आज हम लोग द हिंदू एनालिसिस आज की यानी संडे की लेकर आए. सो आई विल बी डिस्कसिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. सो डू नॉट बॉदर, मैं अंग्रेजी में भी डिस्कस करूंगा और हिंदी में भी. सो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट पेज आर्टिकल. Yes, good morning everyone. Good morning guys. So first page article here it says technology eases path for the weary. And the second important article is blast damages Russia's arterial link to Crimea. ये वाली important article है, ठीक है. So basically we will be discussing these two, जिसमें से ये वाली ज़्यादा important है. This one is more important. So let's first discuss this one. Technology eases path for the weary. देखो, it says the nomadic communities of Jammu and Kashmir have been offered smart cards and free transport aid their biannual migration. Nomadic community, you understand? ये तो स्कूल डेज में भी पढ़ाया जाता है. Nomadic मतलब क्या होता है? यानी those people who do not stay at one place, rather in the entire year they keep on moving from one place to another place, है ना? यानी कि वो एक जगह नहीं रहते हैं, जबकि वो मूव करते जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. मतलब उनका एक फिक्स्ड घर नहीं होता है कि सेम पूरे साल भर रहेंगे. दैट्स कॉल्ड एज नोमैडिक पीपल, राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली दिस आर्टिकल इज कंसर्न अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. सो जम्मू कश्मीर में जैसे गुज्जर्स है, बकरवालास है, हैव अंडरटेकन आर्डियस जर्नी ऑन फुट एज पार्ट ऑफ देयर सीजनल माइग्रेशन टू फाइंड देयर पास्चर्स फॉर देयर लाइफ स्टॉक. तो एक्चुअली क्या होता है कि ये लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं. बकरावाला मीन्स शायद बकरी वगैरह रखते हैं लोग, ठीक है. सो दे हैव देयर कैटल्स विद देम. सो वो करते क्या है स्पेसिफिकली व्हेन जब समर रहता है, सो दे रीच टू द टॉप, माउंटेन एरियाज में चले जाते हैं. दे रीच टू द माउंटेन एरियाज बट इन विंटर दे गो डाउन. ऐसा जनरली होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो माउंटेनियस रीजन के आसपास चले जाते हैं, यानी ऊंचाई पर, और जैसे ही ठंड आने शुरू होती है तो नीचे उतरने लगते हैं, ठीक है. दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस. व्हाई? बिकॉज उनको उसी हिसाब से उनके पास्चर को खाना मिलेगा, यानी लाइफ स्टॉक को. सो दिस इज हाउ देयर कैटल विल गेट लाइक गोट्स, बफेलोज एटसेट्रा विल गेट देयर फूड, राइट? दैट इज व्हाट द आइडिया इज. सो जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस आर्टिकल इट इज बीइंग डिस्कस्ड यहाँ पर पीर पंजल वैली एटसेट्रा एंड ऑल, है ना. पीर पंजल माउंटेन रेंज, देन अदर माउंटेन रेंज एटसेट्रा देयर, इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है. सो हाँ, खाना बदोश कम्युनिटी भी आई थिंक कहते हैं, हाँ राइट शुभम. हाँ, सो इस तरह के मतलब So in these regions actually it is being discussed here. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट कार्ड फ्री ट्रांसपोर्ट टू एड देयर बाई एनुअल माइग्रेशन, यानी एक साल में 2 बार, राइट? सो इन समर दे गो अप अराउंड द माउंटेन एरियाज एंड इन विंटर दे कम बैक, है ना, नीचे आ जाते हैं एट द फुट हिल एंड ऑल. सो दैट स्मार्ट कार्ड फ्री ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा डिजिटल टेक्नोलॉजी हेल्प्स देम. दैट इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है. ये बात हुई है, देखो आपने देख सकते हो यहाँ भी, है ना. So you can go and read. Jammu Kashmir Tribal Affairs Department has surveyed 98,000 such families to map their routes and transit locations. Technology has been leveraged in various aspects, including development of smart cards to replace multiple annual no objection certificate etc and all. ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में, है ना. So एक बेसिक आइडिया लग गया कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी से उनको काफी बेनिफिट हुआ है, स्मार्ट कार्ड्स वगैरह से उन लोगों को भी जो कि नोमैडिक पीपल हैं, स्पेशली कश्मीर के लोग हैं जो कि इधर मतलब मूव करते रहते हैं ना. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. नाउ दिस वाज एन आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थी. ब्लास्ट डैमेजेस रशियाज आर्टेरियल लिंक टू क्रीमिया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. It's just the beginning, says Ukraine president advisor, but did not claim responsibility for the explosion on Kerch railroad bridge. This is a very very important article. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now I'll tell you why. देखो कहां पर एक्चुअली हुआ है. दिस इज, हियर इट इज इंडिया, ठीक है, हियर इज रशिया, हियर इज यूक्रेन, ठीक है. सो हम लोग जूम करते हैं. सो हियर इज यूक्रेन, दिस बॉर्डर इज एक्चुअली रशिया, इधर रशिया है ना. ओके, नाउ दिस इज क्रीमिया. आई होप यू आर अवेयर. दिस वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन बट इन 2014 कैप्चर्ड बाय रशिया, है ना. 2014 में
रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जैसे क्रीमिया ना, क्रीमिया से रशिया का लिंक करते हुए एक ये है ब्रिज है, सो देयर इज अ ब्रिज, ठीक है, विच कनेक्ट्स क्रीमिया विद रशिया। क्यों? इसलिए कि इसके नीचे ना एक शिप जाती है, इसको कहते हैं कर्च स्ट्रेट। वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स कर्च स्ट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी ज्यादा है पिछले 1 साल में न्यूज में, इट हैज बीन इन द न्यूज फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, ठीक है। कर्च स्ट्रेट काफी ज्यादा न्यूज में है, 7-8 महीने से तो एटलीस्ट। तो यही लिखा है ना, एंड यहीं पर इस स्ट्रेट के ऊपर से ब्रिज है, सो देयर इज अ ब्रिज हियर एंड दैट इज व्हाट द ब्रिज इज। यू कैन सी इट हियर, नीचे समुद्र है और इसमें आग लग गई। पावरफुल एक्सप्लोजन सीरियसली डैमेज रशियाज रोड एंड रेल ब्रिज टू क्रीमिया ऑन सैटरडे, हिटिंग ए प्रेस्टीज सिंबल ऑफ मॉस्कोज एनेक्सेशन ऑफ पेनिनसुला, ठीक है। तो ये एक सिंबल भी था ना कि 2014 में इसको रशिया ने कब्जा किया था 2014 में। In 2014, Russia captured this region called as Crimea or Crimean Peninsula in 2014, and this is a link, road and railway link from mainland Russia to Crimea, ठीक है। Now अब देख सकते हो यहाँ आग लग रही है, I think it's a ट्रेन की बॉगी लग रही है ना, so it's a train wagon. So here it is written, देखो Kerch rail road bridge है ना, so this is called as Kerch Strait. They can ask this, just have an idea. Okay, so just go and read it. Let's move on to the next one. There's a question for you. I want to see how many of you can answer it. When is Indian Air Force Day? When is Indian Air Force Day? Yeah, when is Indian Air Force Day celebrated? 9th October, 8th October, 10th October, 11th October. What is the right answer? I'm waiting for your answers. And guys, everyone please press the like button. We are seeing 14 likes. Other three is watching. So सबको like button press कर दो. And one more thing, at 12 PM today, we'll be having a revision series. उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज 12 बजे 2 घंटे का for 2 hours, almost 2 hours, we'll be having a revision series with me. So please do join at 12 PM. Yes, B, good, very good. So it is 8th October, not 9th October. कल था ये, ठीक है। कुछ लोग 9th ऑप्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं। 8th October, yesterday was Indian Air Force Day, and that is why this was an article which got published in today's The Hindu at page number 8. IAF, that is Indian Air Force, all set to create a new weapon system branch, says Air Force Chief, ठीक है। Air Force Chief is Air Chief Marshal VR Chaudhary. Please remember his name. They can ask this in exam. Air Chief Marshal VR Chaudhary is the Indian Air Force Chief, and he has discussed on you can say Indian Air Force Day. You can see during the Indian Air Force Day, the government has approved the creation of weapon system branch for forces and all. So he has discussed in detail about it. So just have an idea that on 8th October it was formed. I want to ask one question. Can anyone tell me in which year Indian Air Force was established? 8th October is right, but on year 8th October, which year, guys? Can anyone tell me? I'm waiting for your answers. So actually it was 8th October 1932. So it is actually during the time of British. अंग्रेजों के ही जमाने में establish हो गया था, and that is why at that time it was called as Royal Indian Air Force, ठीक है। Royal का मतलब जब भी होता है ना, Royal generally is related with king and queen. तो ये actually इशारा कर रहा था ब्रिटिश की तरफ. This was the word Royal was actually referring to the British Indian Air Force, ठीक है। So after that, मतलब after 26 January 1950 when we became a republic, it is now called as Royal हट गया, now it is called as Royal is removed, now it is called as Indian Air Force. Yes, 1932. हाँ ठीक है, so it's 8th October 1932. Okay, yes. Now one more question is, can anyone tell me what is the motto of Indian Air Force? What is the motto of Indian Air Force? And this motto has been taken from which religious scripture? या लिटरेचर। आपको ये बताना है कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है और वो कौन से रिलीजियस लिटरेचर से लिया गया है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। गाइस एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, वी आर सीइंग 19 लाइक्स, 38 इज वाचिंग, सो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो। और आज 12 बजे एट 12 PM एवरीवन हैज टू ज्वाइन, ठीक है। यस, सो व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स? एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखो IAF का जो मोटो है, whenever you see any document etc,
और न्यूज आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा ये, जैसे व्हेन यू से एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद इट और एनी कैन से इफ यू चेक विकिपीडिया इट विल बी देयर, है ना. नभम स्पर्शम दीप्तम which means touch the sky with glory. Yes, good, very good. Himanshu, Sakshi, you all are right. Anushka, touch the sky with glory. और ये आप समझ भी रहे हो कि चूंकि स्काई से रिलेटेड है तो आपको आंसर अगर ऑप्शन में आएगा तो आप बहुत आसानी से ऑप्शन पे पहुंच भी सकते हो. टच द स्काई विद ग्लोरी, एंड कहां से लिया गया है? सो प्लीज रिमेंबर इट, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम भगवत गीता. तो ये पूछ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दे कैन आस्क. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ठीक है. Okay, one more thing is a special announcement today at 12 p.m. 12 से लेके 6 बजे शाम तक चलेगा. And 12 से 2 जो है from 12 to 2 I will be there for you can say current affairs revision. तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम क्वेश्चन देंगे और आपको आंसर करने हैं सिर्फ. ठीक है. So I'll be giving you questions in this class at 12 p.m. Please join today अभी 12 बजे. So I'll be giving you questions and you have to just answer it in the live chat. Please do join it, है ना. And yes, I hope you are aware that from 1st October, we are having CLAT revision series on Tuesday, Thursday, Saturday at 9 p.m. and CLAT revision series on Monday, Wednesday, Friday, Sunday at 9 p.m. Okay, subscribe to our channel so that whenever we put a video, you will get notification. Okay, now let's talk about this. ये काफी ज़्यादा news में था because I mean this was petition was filed in Supreme Court. Debate over audio VVPAT slips for visually challenged. Now you have to understand one thing. What is visually challenged? Visually challenged means those who are having eyesight problem. जैसे blind people or partially blind. Visually challenged वैसे लोगों को कहते हैं जिनको नजर नहीं आता हो या आधा नजर आता हो. ठीक है, उनको visually challenged कहते हैं. अब ये क्या है VVPAT, इसको हम लोग समझते हैं. Let's understand this. अच्छा, I hope you are aware. ये तो सारे लोगों ने देखा होगा. This is called as EVM, electronic voting machine. ठीक है. So whenever you get a chance to vote, जब आप 18 साल से ऊपर के हो जाओगे, so you will get a chance to vote. So when you go inside the can say booth, जब आप वोट देने जाओगे, तो यहाँ पर इस तरह ये EVM होता है, इसी पर आपको बटन दबाना होता है. So these are the buttons, जो ब्लू कलर का है ना, these are buttons. ठीक है, I think 16 बटन होता है, ये लाइट होती है, रेड वाली लाइट है. And these are names, यहाँ पे नाम लिखा रहता है, candidate's name, I mean candidate's symbol and name, है ना. It is like this. Now, होता ये है कि पहले सिर्फ ये होता था, this was called as EVM, electronic voting machine. Now, what happens is, let's say you want to vote someone, let's say his political party is X, his or her political party is X. मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आपको वोट करना है एक बंदे को जिसका पॉलिटिकल पार्टी X है, तो आपने यहाँ बटन दबाया. जब आप ब्लू पे बटन दबाओगे तो रेड लाइट जलेगी उसके सामने की. So when you press the blue light, the red light will blue button, the red light will blink. एंड यहां पर पहले सिर्फ इतना वोटिंग होता था, राइट. लेटर ऑन एक्चुअली देयर वे सम एलिगेशंस कि ईवीएम कैन बी हैक्ड एटसेट्रा, बहुत सारी बातें आई, तो फिर बाद में ये ऐड किया गया. व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड एज वीवीपैट. ये जो डिब्बा अलग से आप देखते हो, ये दिस वन, इसको कहते हैं वीवीपैट. एंड व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? एक्चुअली इट्स फुल फॉर्म इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. जब आप ये बटन दबाओगे, लेट्स से यू वोटेड टू समवन, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये एक्स को आपने वोट दिया, यू वोटेड टू एक्स, तो यहाँ पर वो सिंबल बना हुआ जाएगा. सो दैट सिंबल विल कम हियर. ठीक है, ये डिब्बा में 7 सेकंड्स के लिए ये कागज आएगा, उसमें 7 सेकंड के लिए वो लोगो बना रहेगा, जिसको आपने वोट किया वो सिंबल बना रहेगा, फिर ये डिब्बा के अंदर चला जाएगा 7 सेकंड्स के लिए. क्यों? वेरीफाई करने के लिए कि जो जिस पर आपने बटन दबाया है वही इसी पर वोट गया है कि नहीं. ठीक है. सो इट इज टू जस्ट वेरीफाई दैट व्हाटएवर यू हैव, whosoever you have voted, the same person has got the vote. ठीक है. सो it's called that. अब ये जो पेटिशन फाइल किया गया, द पेटिशन हैज बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, कि जो बंदा को नजर नहीं आता है वो तो ये नहीं देख पाएगा ना, कि तो वो ये बता रहे हैं द पेटिशन हैज बीन फाइल्ड कि ऑडियो वीवीपैट भी होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस जैसे लेट्स से यू वोटेड फॉर एक्स पर्सन, सो एक्स शुड बी रिटन हियर एंड इट शुड स्पीक, यानी स्पीकर लगाओ जिसमें वो कहे कि आपने एक्स को वोट किया, राइट. दैट इज व्हाट द आइडिया. सो पर्सन हु हैज फाइल्ड द पेटिशन in the Supreme Court, he wants audio VVPAT also. Audio VVPAT means that the person who is voting should hear also from this. There should be some speaker here which should speak. Yes, you have voted to this political party. Yes.
so that one who is having visually challenged या जिसको नजर नहीं आता वो भी सुन के समझ ले कि हमने सही आदमी को वोट दिया जिसको हम चाहते थे. Okay, is it clear? That is what the idea is, and he has filed petition for that, है ना? Okay, now let's move on to page number 8. सबको press कर दो like button. We are seeing 23 likes, 42 is watching. Yes, Katam Praveen, I have explained both the languages. See, what happens is whenever you vote, okay, so let's say you have voted to X person. So the symbol of X comes here in this for 7 seconds, and then after it goes. Now, if somebody is blind, then he cannot check that who is that, whom the person who he has voted. So the person has filed a petition in Supreme Court that, let's say you vote for X person, then here X should come here, that yes, you voted for X, and there should be a speaker which should say that you voted for X, okay, so that the person who is blind can get to know with the help of hearing, and he need not to check it by eyes because he cannot watch, or he does not have the visual capability to see. Okay, that is what the idea is. Okay. Now let's talk about this. We are very confident of navigating OPEC plus supply cuts, says Mr. Hardeep Singh Puri. He is Petroleum and Natural Gas Minister. See, understand one thing. What is OPEC? So OPEC is this. It's a grouping of nations, organization of petroleum exporting countries, which comprises of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. And when we say OPEC plus, it includes Russia and some other nations also. Okay? So basically OPEC are those nations which have which provide petroleum and natural gas to the rest of the world. Okay? Now they are, you can say, petroleum exporters of the world. ठीक है, तो OPEC nation वो होता है, वो लोग की grouping है जो लोग petroleum export करते हैं पूरी दुनिया को. So they actually, if they want, like recently they have decided, OPEC nations, they have decided OPEC plus, a group led by Saudi Arabia and involves Russia, announced that it would cut production by 2 million barrels per day. It means it would reduce its production. Okay, if production of international oil is reduced, what will happen? The price of international oil will increase further. ठीक है, अगर कोई चीज मार्केट में किसी चीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आप अपने आप लॉजिक लगाओ, अगर डिमांड उतनी ही है, सप्लाई कम हो गया तो महंगाई बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए हरदीप सिंह पुरी साहब बता रहे हैं कि हम लोगों ने उसका इंतजाम कर रखा है, मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट नेविगेटिंग OPEC प्लस सप्लाई कट्स. सो ही सेज दैट we will not get much affected. We are confident enough of being able to navigate through the situation, that if the production is reduced, maybe the prices will increase, but we have our plans and you should not bother about it. यानी टेंशन नहीं लेने का. Is it clear? समझ में आया? Okay. Yes, now there was an article here, CGI sets a frenetic pace in Supreme Court. I hope you are aware that the current Chief Justice of India, Justice BYJU'S Lalit, has been appointed for hardly 74 days. है ना? So that is what the author is saying, he is doing it with a full speed because he is having very less time. And recently the collegium led by Chief Justice of India has recommended the Bombay High Court Chief Justice, Justice Deepankar Datta, to be the next Supreme Court judge, I mean to be elevated to Supreme Court. तो जस्टिस BYJU'S ललित साहब की बेंच हमारे कॉलेजियम ने 5 जज की कॉलेजियम ने, जो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उनको सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए कैन से बात कही. ठीक है ना, रिकमेंड किया है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को. ओके, इज इट क्लियर? यस. अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, आई मीन दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज, गवर्नमेंट सीक्स ललित्स रिकमेंडेशन ऑन नेक्स्ट, दैट इज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. So generally, so he's going to retire, I think on 8th November, है ना? So 1 month before his retirement, generally the government asks for the next Chief Justice of India, है ना? 1 महीना बचा रहता है रिटायरमेंट को, तो जनरली जो है सरकार जो है दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की नाम मांगती है. So generally the convention is that the senior most judge of Supreme Court after the CJI retires, the senior most will be the Chief Justice of India, ना? ऐसे ही होता है ना, जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे सीजीआई के रिटायर करने के बाद वो जो है सीजीआई होंगे. तो उस हिसाब से जस्टिस DY चंद्रचूड़ विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 8th और आई थिंक 9th नवंबर, है ना, 9 नवंबर से. ओके, देयर वर सम आर्टिकल्स एक्चुअली, कुछ देयर वर सम फेक न्यूज़ वेर स्प्रेड दैट ही इज हैविंग अ US ग्रीन कार्ड एटसेट्रा एंड ऑल. सो बट ये बात गलत है.
और अगर इफ सी द eligibility criteria for a judge of a Supreme Court and Chief Justice of India is same. So if he is not let's say an Indian citizen, so then how can he become a Supreme Court judge? ठीक है, so उस पर उतना ध्यान नहीं देना, बहुत सारे मतलब there were some articles coming in like this, so just have an idea that most likely of course he will be the next CGI. Okay, now let's move on. कितने नंबर के होंगे? Go and find out. अभी मैंने बताया X CGI, what is I mean which number? Go and find out. As prison overflow, BSF lets migrant with clean record return to Bangladesh. Many Bangladeshis were arrested at the borders. Since the prison is overflowing, those who do not have a bad record, like they were not involved in narcotics, fake currency, etc., were allowed to return back to Bangladesh. तो जो लोग को कोई खराब रिकॉर्ड नहीं, उनको वापस कर दिया गया, इसलिए कि प्रिजन में जगह भी नहीं होती. यूएस ग्रीन कार्ड क्या होता है? एक्चुअली देखो होता क्या, whenever you want to become a US citizen, first you want to apply as a US green card. ठीक है, so when you get US green card, going to USA becomes easy. ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप है towards getting US citizenship, इस तरह लोग कहते हैं जनरली. ठीक है, ओके, मतलब when you if you have US green card, it means you have half of the rights, many of the rights you will get of US citizen, although it's not US citizenship. ठीक है, just have an idea. ठीक है, then yes, आपने ये वाला न्यूज सुना होगा, थाईलैंड ex cop kills 24 children, 13 others in mass shooting at daycare center. Very unfortunate news. इसको एक बार ऐसे रीड कर लीजिएगा, just have an idea. Then China defense policy on Xinjiang asserts it's not about rights. I hope you all are aware of this. Because 2 days back it was in news, India abstains from voting in UN Human Rights Council or holding debate on China's treatment of Uyghur Muslims. So actually क्या है, I hope you are aware that here Uyghur Muslims live in Western China and this region. So there is an allegation against China that China is doing human rights violation. चाइना के खिलाफ जो एलिगेशन है वेस्टर्न नेशंस का, वो ये है कि उइगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है चाइना. सो उसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में. अ रेजोल्यूशन वाज ब्रॉट and was led by US, UK, Norway, Sweden, etc. But India abstained from it. Abstained means neither supported nor opposed. Okay, so just have an idea about this also, because UN Human Rights Council काफी ज़्यादा news में, it has been very much in the news. So that is why I'm saying. Okay, now there's an article on page number 12. Chandrayaan 2 gauges sodium content on moon's surface. ठीक है. So एक चीज just have an idea. I hope you are aware Chandrayaan 2 launched by ISRO. है ना, have mapped out the global distribution of sodium on moon's surface. मून की सतह पे कहां कहां पर सोडियम है इसको फाइंड आउट किया है. ठीक है, so it's a very good thing that ISRO has found that wherever ये कहां कहां पर सोडियम मिलेगा मून के सरफेस पे. where can say it has mapped where do you find sodium on the surface of moon. So that is what it says. class instrument, ये सब पूछ सकते हैं एग्जाम में, because they have a habit of asking these questions. They use the class instrument Chandrayaan 2 large area soft X-ray spectrometer carried by the second Indian moon mission Chandrayaan 2. ठीक है, so class instrument they can ask, star market. ठीक है, okay, just have an idea about it. Okay, then there was an article, what lies at the heart of Nobel Prize in Physics. I hope you are aware these three people have got Alan Aspect, Anton Zilger and John Clauser. क्या चीज के लिए मिला है? Just have an idea. They have got for quantum research, quantum science या quantum mechanics. Okay, you can go and read more about it. I would suggest कि you should make notes out of all Nobel prizes this time. जो जो Nobel Prize जीता है सारा का एक जगह notes बना लो. That will be very very beneficial for you. ठीक है, okay. So guys, please do join our courses. 45 plus marks covering all law entrance tests, 20 CLAT, 25 non-CLAT mock tests, 9,000 plus practice questions, 3 all India open mocks with video solutions will be provided. Test series curated by NLU alumni, etc. will be there. And please subscribe to our channel at 12 PM. I will be meeting you. Yes, Muskan Goel, try to read the Nobel Prize of all the 3. Nobel Prize of all 6. At least Nobel Peace Prize पता होना चाहिए. ठीक है, and go and find out which nation gives which prize. तो Nobel Prize से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए I would say कि all 6 you should try to remember. पूछ सकते हैं. ठीक है,
आज की क्लास थोड़ी छोटी है बिकॉज वी आर हैविंग फ्रॉम 12 PM to 2 PM. ये क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा राइट नाउ एट 12 PM. वी विल बी हैविंग अ रिवीजन सीरीज, प्लीज डू ज्वाइन इट. ठीक है, ओके, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस एंड जस्ट यू हैव टू आंसर इन लाइव चैट. ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको आंसर करना लाइव चैट में. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.